Now, in the last class, what we talked about was we did May, June 24 IGCSE, and we went until question number 4. Now, let's start off with the remaining questions. Now, the very first question that we have on a list says, figure 5.1 is a photograph of a koala. Koalas are marsupial mammals that give birth to live offspring that are incompletely developed. The offsprings develops further for several months inside the pouch of the mother, right? Like we have kangaroos, I think we have platypuses as well. Now, वो कह रहा है state one feature visible in 5.1 that could be used to identify that koala is a mammal, right? So when we talk about mammals, mammals के observable features क्या होते हैं that separates them from the rest of the, let's say, the animals is, as Hamza said, sir, their ears have flaps, right? This flap is what we call as a pinna, right? So we can say कि भाई ears have flaps या फिर pinna visible. It's basically pinna. My Karachiite accent makes it a pinna. खैर, pinna visible या हम लोग कह देंगे कि भाई it's basically the external ear flaps present, right? अच्छा जी. Now, fur भी लिख सकते हैं. Very good, Fawaz. So भाई हम लोगों ने कह दिया the body is covered with fur, right? Very good. It has fur. ठीक है? Fur too, yes. अच्छा जी. अब अगला सवाल कह रहा है कि भाई mammals use sexual reproduction to produce offsprings. Discuss the advantages of sexual reproduction in organisms such as koala. देखो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या होती है whenever we talk about sexual reproduction is genetic variation. और genetic variation क्या करती है? Genetic variation allows new alleles to be introduced into the populations so that if there are changing environmental conditions, the organism can adapt to them, right? तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके sexual reproduction increases genetic variation in what? In offsprings, right? Allowing, let's see, allowing new alleles to be passed on in the population so the organisms can survive the changing selection pressures. Selection pressures क्या होते हैं? They're basically environmental conditions. So they or so the chance of them becoming extinct decreases. All right. तो ये चीज है हमारे पास. मेक सेंस? अच्छा जी. अब अगर हम लोग देखें हमारे पास अगला सवाल क्या कह रहा है. अगला सवाल कह रहा है सी figure 2.5.2 is the diagram part of the human female reproductive system viewed from the side of the body, right?
What are the functions of write the letters and the functions of the let's say the organs that are named or the parts that are named, right? So before we jump onto this question, what we're going to do is we're just going to label the parts right here. ठीक है? अब हम लोग ने the front view पढ़ा है ना? So what I'm going to do is we're going to study the view that we study, right? So we have this particular part. So this right here is the uterus. Let me make the endometrium right here as well. These tubes coming out are called as oviducts, and these oviducts come towards the ovary, right? Acha. The passage or the site of deposition of the sperms that we have, right, is what is the cervix right here. ठीक है? अच्छा अब देखो. अब सबसे पहले अगर हम लोग देखें, so we have the entrance right here, and then we have this curved structure right here. From this curved structure, this tube is coming out, right? And then we have this K, and then we have this structure. As Ishal said, Mr. L, I think, is the ovary. What do we call this tube that leads to the ovary? That's the oviduct. ठीक है? Now, now, similarly, अगर हम पीछे हैं तो P क्या होगा? This particular sac is going to be the what? It's going to be the complete uterus, right? And what would be the passage that would be leading to the uterus, right? This right here, M, would be the cervix. The tip of the uterus right here is going to be the cervix. This is the site of deposition of the sperm, right? Make sense? Okay. अच्छा जी. अब N हमारे पास क्या होगा? Obviously, that's going to be the vagina. ठीक है? Outside the or before the cervix is going to be the vagina, right? P placenta कैसे है, Fawaz? This is not let's say this is not a pregnant female, right? Do we see a fetus here? Placenta तो fetal tissue है ना मेरा बच्चा, वो grow किधर करता है? तो P तो uterus हुआ ना मेरा बेटा, right? अच्छा, अब वो कह रहे हैं भाई फंक्शन बता दो. भाई cervix का फंक्शन क्या है? It's a site of deposition of sperms. लेटर हमारे पास क्या हो जाएगा? इट्स गोइंग टू बी एम. ओवरी हमारे पास क्या है? एल. राइट. क्या करती है? ओवरी प्रोड्यूसेस द ओवम. या फिर इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन, राइट? ये भी लिख सकते हैं हम लोग. प्रोड्यूसेस रिलीजेस एस्ट्रोजन. अच्छा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन हमारे पास क्या है? ओविडक्ट. सी, so what's a site of fertilization? It's always the oviduct, right? Okay. और क्या होता है हमारे पास? ओविडक्ट. ओविडक्ट को हम लोग और क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब. साइट ऑफ इम्प्लांटेशन क्या है? हाँ भाई. So if you would go back to our lectures, so किधर के reproduction mammals ये रहा. ठीक है? So हम लोगों ने कहा था भाई साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तो हमारे पास ओविडक्ट है. इम्प्लांटेशन क्या है? यूट्रस में इम्प्लांट होता है. यूट्रस में एंडोमीट्रियम. एंडोमीट्रियम इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस. ठीक है? तो यहाँ तो हम स्पेसिफिकली एंडोमीट्रियम नहीं बताया हुआ, तो हम लोग क्या मेंशन करेंगे? यूट्रस. यूट्रस इज व्हाट? पी. ऑलराइट, सो प्रीटी इजी सवाल, राइट? ओके. अच्छा, अब वो कह रहे हैं प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल्स हैव अ प्लेसेंटा. Describe the functions of the placenta in humans for 4 marks. For 4 marks, what we'll do is we'll give them four functions. Okay, my placenta acts as an exchange center. So I'm just going to copy it from here. Hee hee. Let's just zoom this up. All right. So, okay, बहुत ज़्यादा zoom हो गया. Easier than writing out. ठीक है? अच्छा, तो हम लोगों ने क्या बताया कि भाई it allows oxygen diffuse from the mother's blood into the fetal blood, allows CO2 to move out from the fetus blood into the mother's blood, carries out gaseous exchange. इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर टाइम कम हो तो. It allows the exchange of nutrients and waste products, right? Allows the nutrients to diffuse into the fetus and or in fetal blood, and waste products out from the fetus.
It allows the mother's antibodies to move into the fetal blood. It produces progesterone. ठीक है? All right. अच्छा जी. अच्छा. अब वो कह रहा है the placenta is connected to the amniotic sac. Two functions of the amniotic fluid found in the amniotic sac. हम लोग तीन बताएंगे क्योंकि हम लोगों ने तीन लिखे हुए ही. हम लोगों ने क्या कर दिया? So we told them that right here that the amniotic fluid maintains the fetal position. It prevents the fetus from moving about, right? It prevents the mechanical damage. It lubricates the cervix so that during provide childbirth, it's easier for the let's say the baby to be delivered. ठीक है? उसके अलावा स्टेराइल एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं. चौथी चीज मैंने उस वक्त नहीं लिखवाई थी. Provides an environment or provide environment free of pathogens, या फिर हम लोग सिंपल से लिख देंगे स्टेराइल एनवायरनमेंट, कि उसके अंदर कोई पैथोजेंस नहीं होते. ठीक है. मोटिलिटी नहीं. प्रिवेंट्स मैकेनिकल शॉक्स. वेरी गुड. ठीक है. प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो और द फीटस फ्रॉम डैमेज. ठीक है भाई. ओके. नाउ मूविंग ऑन. अब अगला सवाल कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंसेस अबाउट द ह्यूमन टीथ. सो इट्स अ प्रीटी इजी सवाल. ठीक है. uh, the process of taking in food in the mouth is called as what? It's called as ingestion, right? Flat, sharp edged teeth at the front of the mouth are called as incisors. ठीक है. uh here and you are used for biting the food pieces. The dash and dash are large teeth towards the uh back of the mouth, the molars and molars, right? That are used for grinding of the food. ठीक है. ओके डॉक्स. ऑलराइट. मेक सेंस यहाँ तक कोई मसला? इजी. ओके. ऑलराइट. नाउ अब वो सवाल कह रहा है कि भाई फिगर बी फिगर 6.1 इज अ डायग्राम ऑफ द विलस. अच्छा, एक बार ना हम लोग यहाँ विलस को एक जल्दी से देख लेते हैं सो दैट वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि भाई इसके अंदर क्या होता है, लोकेशंस हमारे पास क्या है. अब अगर अब इसको टू कलर इट. ठीक है. देखो, दिस राइट हियर ऑन द आउटसाइड इज द लाइनिंग ऑफ द विलस. ठीक है. ये विलस है, ये पूरा एक टिश्यू है. इट्स मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट सेल्स. ये जो स्क्वायर हमारे पास रेक्टेंगल से स्क्वायर्स है ना, देर ऑल सेल्स. सो विलस राइट हियर, प्लीज रिमेंबर मेरे बच्चों, विलस हमारे पास इज अ टिश्यू. And every tissue that we have are supplied by what? Are supplied by different vessels. Now, the villus is supplied with two vessels. We have the lacteals and the blood capillaries. Lacteals हमेशा कहाँ होती है? Lacteals are right here in the middle. ये जो middle वाली vessels है, right here that's coming out, ये lacteals हैं. देखो मेरे बच्चे लोग, lacteals branch किससे करती हैं? Lacteals are a branch of the lymphatic vessels. कोई भी चीज such as fatty acids, such as glycerol. ठीक है. तो वो हमारे पास क्या होते हैं बेटे? दे एनीथिंग दैट कैन नॉट बी टेकन अवे इन द ब्लड आर टेकन थ्रू द लेक्टिल्स, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल नहीं होगी.
अब अगर हम लोग दूसरी वेसल्स देखें, प्रोवाइडिंग द लेक्टील्स विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट हियर, राइट, ये हमारे पास कौन क्या होंगी? दीज विल बी द ब्लड कैपिलरीज। बेटे टिश्यूज को ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना रिस्पायर करने के लिए, तो उसको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कौन पहुंचा ला के देगा? उसको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ला के देंगी हमारे पास ब्लड कैपिलरीज। The deoxygenated blood would be taken away again by the very same capillaries, and a vein is going to be formed like this, right? Okay. 10% deoxygen blood to the heart. The lymphatics, Mansoor? Are you talking about the lymphatic bit? वो टिश्यू फ्लूइड, 10% टिश्यू फ्लूइड, नॉट द ब्लड। लेक्टिल्स नेवर टेक ब्लड। अच्छा, अब वो कह रहा है ड्रॉ एंड लेबल, ड्रॉ लेबल्स एंड लेबल लाइंस टू आइडेंटिफाई कैपिलरी एंड लेक्टिल। ठीक है, तो हम लोगों ने लेक्टिल तो बना दी भाई, ठीक है, राइट राइट इन द मिडिल हमारे पास लेक्टिल होगी। प्लीज रिमेंबर, जब भी आप लोगों को वो कहे लेबल लाइंस बनाने का, तो प्लीज ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस लाइक दिस। ज्यादा मोटी हो गई है, लेट मी डू इट इन ब्लैक सो इट्स मच इजियर टू पॉइंट आउट, राइट। और दूसरी बात हम लोग क्या कर देंगे, वी गोइंग टू राइट कैपिलरीज। प्लीज डू नॉट ड्रॉ एरो हेड्स। लेबलिंग के अंदर एरो हेड्स नहीं बनाने, जब तक वो नहीं बोले भाई ड्रॉ एन एरो। ओके। अच्छा, अब वो कह रहा है स्टेट द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर द विलाई आर लोकेटेड। इट्स प्रेजेंट इन द इलियम। ठीक है, अगर कभी हम लोग भूल जाएं तो स्मॉल इंटेस्टाइन लिख दीजिएगा, यू विल गेट अ मार्क। स्टेट द फंक्शन ऑफ द लेक्टिल्स। टेक्स अवे या फिर absorbs fatty acids and glycerol। ठीक है, so pretty easy, very good। अच्छा, describe the pathway taken by the products of protein digestion from the villi to the liver, very easy। ठीक है। अच्छा, what will be the products of protein digestion? They will be what? They will be amino acids। ठीक है जी, तो हम बता देंगे amino acids once produced move या फिर are absorbed are absorbed in the blood capillaries by the process of diffusion। हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, हम सिंपल सा कह देंगे diffusion of the blood capillaries, and are transported to the liver through कौन सी वाली vein? Hepatic portal vein, right? Hepatic portal vein। All right, so this concludes IGCSE 24।